But the biggest story this election season is a remark that was made by the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in 2006. And that's the big election story that is also the face-off right now between Prime Minister Modi on one side and the entire opposition INDA alliance bloc on the other. This is about the remarks that the Prime Minister made about the Congress promising to redistribute people's wealth. Now, over the last many hours, you've seen that the Prime Minister made these remarks in Rajasthan's Banswara. He also said that the Congress intends to distribute wealth to infiltrators and to those, he said, with many kids. The Prime Minister doubled down on that attack. Again, he was addressing a rally in Tonk in Rajasthan, where again he said that he has exposed Congress's hidden agenda of appeasement politics, and this has left the Congress trembling. First up, the attack. 90 सेकंड का भाषण और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोग है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? So this is what the Prime Minister has said today. But do remember, just hours earlier, the Prime Minister, when again he was in Rajasthan, is where he's made that first frontal attack against the Congress, and he reignited that entire debate that came in post that comment that was made by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh in 2006. And this is then what he said. पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। And clearly, the opposition hasn't taken very kindly to these remarks by the Prime Minister. The opposition says that this is a ploy to divide people, and they also allege that the Prime Minister right now is running scared. ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। Prime Minister claims to be an admirer of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar said one of the most important things missing in our country and society was the brotherhood amongst our citizens. That's why he insisted on adding the word fraternity to the Constitution. Now, if we are all brothers, should we be drawing distinctions like the Prime Minister is doing? Does he not? Why should it be appeasement if I look after my brother, especially if he's not doing well? I mean, to my mind, there is something wrong in a mentality that classifies the citizens of India in such a way. A Prime Minister should be Prime Minister for the whole nation, not only for one segment of the population. बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई
क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। So the BJP only wants to polarize. They're running scared. Those are the charges that the opposition is making. And also a good moment for us to introduce a panel of guests right now. We have Siddharth Yadav, spokesperson of the BJP with us. Also Dr. Rajgopalan, who's a senior journalist, and he has a very wide canvas that he's going to be, looking at and telling us about how this entire remark by the Prime Minister makes an impact or no impact. Ajay Varmaji is leader of the Congress also, and Mir Inayat Ali is leader of the BRS. He completes our panel. And without wasting time, Siddharth, I have to first ask you, as Mehbooba Mufti, Shashi Tharoor, Akhilesh Yadav have just said, why are you running scared? If you've done development, if you've done Vikas, why is the BJP right now, according to them, playing this binary of Hindu versus Muslim? Deepthi, we are not scared. We are not scared of anything because the track record that we have for the last 10 years, that is enough for the people of this country to support us in numerous number of times when we go to them for polls. Okay. But the point is, we have not written the manifesto of Congress party. Neither we had put in words in the mouth of the then Prime Minister Manmohan Singh ji. When they say on the stage, when Manmohan Singh comes out and says on the stage that the first right on the resources of this country is of particularly of the Muslims, he uses this word. Is that not Hindu-Muslim? Okay. When the Congress party brings out a manifesto and then it is all similar to what was the demands of the Muslim League in 1936, the same manifesto is being brought in 2024. When they say that they'll take away the reservation of SC, ST on OBC and EWS and give it to the minorities, is it not Hindu-Muslim? Okay. When they say that they'll amend the constitution then and they'll add to the judiciary, they will add judges to this country based on religion, is that not Hindu-Muslim? The Okay. question is for the Congress party tonight. Okay, Siddharth, What is the you Congress raised questions party for the doing Congress. when Let's they go one say by one. Hindu Let's and go one Muslim by one. in all अजय their documents? जी अब जवाब दीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ ये कहते हैं कि गिल्टी तो आप ही हैं। ये सारी पॉलिटिक्स हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो शुरुआत है ये तो आप ही लोग करते हैं और आप ही को एक ही कम्युनिटी दिखती है। तो आपके चश्मे में अगर एक कम्युनिटी नजर आती है, आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है सिद्धार्थ जी तो एक सीडीआर एजेंडा लेके चले आते हैं जो इन्हें आईटी सेल से मिलता है। इनका अपना कोई वर्ड और वर्जन नहीं होता, उसको सुबह से शाम तक ये फैलाते रहते हैं। केवल पूरा देश जानता है 2014 के बाद हिंदुस्तान में धर्म की और जात की राजनीति कौन करता है। और हमने 17 शिकायतें कल चुनाव आयोग को, ईसी को की हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति, कभी पहला वोट पुलवामा के नाम, कभी पहला वोट राम मंदिर के नाम, अब पहला वोट मुस्लिम हिंदू के नाम। तो ये सियासत जो करते हैं धर्म की, जाति की या देश में सोशल फैब्रिक खत्म करने की, और कोई नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास अपने काम गिनाने के तो कुछ है नहीं। तो केवल देश के सबसे बड़े जो देश के प्रधानमंत्री सम्मान होते हैं, मान होते हैं, उन्हें एज ए भाजपा लीडर, भाजपा नेता की तरह भाजपा यूज इसलिए कर रही है क्योंकि वहां अधिनायकवाद है, बीजेपी खत्म हो चुकी है, वहां वो पार्टी का नाम बदल के मोदी पार्टी रख दिया है हमने। अच्छा अजय जी देखिए, सवाल थोड़ा पॉइंटेड था, आप इसको नरेंद्र मोदी पर ले आए हैं। ठीक है अजय जी मैं आपसे दोबारा एक चीज पूछती हूँ, उसके बाद we'll get the BRS and Dr. Rajgopalan also. See, if you look at the Congress manifesto, Ajay ji, just one example, sir. The Congress manifesto says will address the growing inequality of wealth and income through suitable changes in policies. तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सी पॉलिसीज हैं, कैसे आप चेंजेस या बदलाव लाएंगे अजय जी? अजय जी, आपने क्या पूछा मुझसे?
मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका मैनिफेस्टो ये कहता है कि विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू suitable changes in policies. It says about caste discrimination is a reality. It also says we will ensure that the minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare, public employment. So how will you do this? What are the specific policies जिसको आप लाकर ये सारी growing concerns को address करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कहते। भारत का संविधान जो कहता है हम संविधान के अनुसार चलते हैं। देश में, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ ईटिंग, फ्रीडम ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ बियरिंग भारत का संविधान देता है। और देश को, संविधान को कुचलने का काम जी, आप दूसरे टेंजेंट पे जा रहे हैं सर। सवाल थोड़ा पॉइंटेड था कि अगर आप खुद माइनॉरिटीज का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में करते हैं, आप हमें बताइए कि कैसे होगा। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, वो कैसे किया जाएगा? अभी मैं बीआरएस के पास चलती हूँ, बिकॉज द बीआरएस, आई वांट टू फाइंड आउट वेदर द बीआरएस इज इन अलाइन विद व्हाट यू हैव सेड. Do they agree with your reasoning here, or do they agree with what the Prime Minister is saying? Mir Inayat Ali ji, how would you respond to what you've heard in this fight so far? The Prime Minister says that there is a sinister attempt right now to use this appeasement angle by the Congress. But the Congress says, don't ask us, we are not guilty, the BJP is to be blamed. Where does the BRS stand in this? Firstly, madam, I put one question in front of Congress and in front of BJP, in front of local parties also. What is the meaning of minority? What is the meaning of minority? Okay. Actually, मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज के जो हालात है, उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि मुसलमान वोट जिसको देते हैं, चाहे वो वोट राव को दो या रेड्डी को दो या ब्राह्मण को दो, ये वोट जो जाता है वो एक हिंदू बिरादरी को जाता है। मगर उसके बावजूद हमारे मुसलमानों को, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर इस इलेक्शन में मुसलमान विश्राम करे ताकि पता चले कि हम किसी भी देश के अंदर हमारा वैल्यू क्या है। हम कांग्रेस के लिए भी पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को 5 सीट देती है और वोट मांगती है मुसलमानों के, और लोकल बॉडी भी कम देते हैं, कहते हैं कि आप जीत नहीं सकते। जब आप भी कांग्रेस आल्सो गोइंग द सेम वे ऑफ द बीजेपी। So Mir Inayat ji, who's the bigger enemy? हमारे पास Mir Inayat ji, who's the bigger enemy? Who's guilty of appeasement? Will you blame the BJP here? Will you blame the Congress here? Now the BJP is openly say, though we don't want the Muslim vote, but the Congress asking the Muslim vote, but they are not giving the single 5, only all over India they are giving 5 seats only. Okay. He's pretty angry. Ajay ji, Mir Inayat ji of the BRS is also showing you the mirror. He's also showing the mirror to Siddharth. But Rajgopalan ji, before I come to you, Siddharth, Rajgopalan ji, how will this entire issue, do you believe, pan out? Is this a red flag? Is this really the Achilles heel of the Congress? You believe that this is essentially a mudda that people are talking about? Narendra Modi has caught Congress on the wrong foot, tight fought. And what you asked me, Deepthi, yes, it's a red flag. Mr. Narendra Modi raised it because the Congress manifesto, why should it say redistribute the wealth? Who are they to redistribute? Is it Ambani's or Adani's or you and me? Suppose Deepthi and Rajagopal have 2 houses in Delhi. They will take the one house from you and give it to XYZ. I don't have any house, by the way, Mr. Rajgopalan. I don't own any house. I'm saying, your Deepti's, properties or Rajagopal's property, or even for that matter, Ajay's properties. What did they do? What is that strategy? And moreover, the long speech of Prime Minister Narendra Modi is an eye-opener, and whomsoever has written this manifesto and whomsoever has approved this manifesto, it is the handiwork of Mr. P. Chidambaram because he is the chairman of the Congress election manifesto. Yes. He should be answerable to this. How can he divide the country and how can he bring the Muslim into that? That is the reason Prime Minister took it umbrage on that. Prime Minister ने बोला था आज नींद आराम हो गया इन लोगों का। मैंने कहा सच्चाई का, they are scared of truth.
सच्चाई से क्यों डरते हैं? कांग्रेस शुड आंसर टू दिस. Okay, Rajgopalan ji कहते हैं इनका नींद हराम हो गया है. Ajay ji, on the other side of this quick break, I'll let you respond to what you've just heard, also from the BRS and from Rajgopalan and Siddharth. On the other side, you can also respond to whether this is really the Vikas push by the Prime Minister. We'll quickly head into a break. On the other side, this conversation, ladies and gentlemen, continues. Welcome back. You're watching The Nation Wants to Know, and for the third consecutive day, remember, you've seen the Prime Minister heating out at the Congress. The charge is appeasement. The Congress says, we do not believe it, show us the proof. But clearly, this is an issue that has picked up a lot of traction also on the social media. Siddharth Yadav of the BJP, Mr. Rajgopalan, senior journalist, also Ajay ji of the Congress, and Meena Rai Ali Bakri of the BRS continue to stay with us. And Siddharth, without wasting any time, why don't you respond to what you also heard from your friend in the BRS? He says even you are equally guilty because aap Hindu Musalman karte hain and you believe this is the best way to polarize votes, Siddharth. But I want to know, why should the BJP be wanting to do this? You know, the Congress, the appeasement charge has stuck for long, Siddharth. But this is not how the BJP plays its politics. Deepthi, I want to remind my friend from BRS who takes support from OVC and sits here on Times Now and asks, who is a minority? One must ask, who is a minority? You forgot, sir. You ran your government appeasing the Muslims of this country and now you want to play all clean. And this is the problem with Congress and this is the problem with all opposition parties. We don't do that, Deepthi. We don't do that. We have from the very beginning been saying Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. We have been working for all communities. When we say Garib, Yuva, Nari, Annadata, we don't diversify on the name of religion. We don't diversify on the name of caste. Okay. We're working for all sections of the community. But when Congress party comes out and says, you don't agree with what a lot of opposition says, that what the Prime Minister two, said was hate speech. Just yes or no? No, absolutely not, Deepthi. Okay. Absolutely not. If the Prime Minister is pointing out that, I'll just take 10 seconds. Yes. Rahul Gandhi says, we'll do a survey. Then we'll do a Krantikari step. Then we'll redistribute all this wealth. Jiski jitni hissedari, utni bhagedari. Then Garibi will be gone. Thakatak, thakatak, khatakat, khatakat. What is that? Ajay ji, You want to do it in one day by Ajay ji, taking what? Taking the property to from what Deepthi Siddharth and is giving saying. to somebody else? कि अपीसमेंट तो आप करते हैं, आप लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं. देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने देश की जनता से 145 करोड़ लोगों से पूछ के जो अपना न्याय पत्र घोषणा जारी किया है हमने, जिसमें 25 गारंटी दी है और खास करके 5 गारंटी श्रमिक को, युवा को, महिला सुरक्षा को, बेरोजगार को, अजय जी समय लिमिटेड है, इसीलिए एक ही बात पे जवाब दीजिए कि क्या आप भी कास्ट को लेकर लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं? और वो भी एक जुमला है, ये कहती है भाजपा. फाइनल उससे घबराकर ये लोग घबरा गए. चुनावों में इन्हें हार मिल रही है, इसलिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. कास्ट की राजनीति, बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति, सेना की राजनीति भाजपा और इसके नेता करते हैं, हम नहीं करते. मैं इसको सिरे से नकारता हूं. Because I've run out of time, I'll just give 10 seconds to Meer Ranai ji and also to Rajgopalan ji. Meer Ranai ji, how would you respond to what Siddharth has said, that you are also guilty of appeasement? How can you say that you are different from others? 10 seconds. मैं सुभाष जी से पूछता हूं कि आप ये बताइए, जब मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, आपने कहा था कि युवा को देंगे, हर कम्युनिटी को देंगे, तो मुसलमानों को आप पूरे देश में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर 5 सीट दिए हैं आप. तो क्या ये मुसलमानों के साथ इंसाफ है? इनका वोट चाहिए, इन्हें सीट ना दे. ये क्या होता है कि नेता लोग जवाब पूछते हैं, 30%. देखिए सवाल पूछा जाएगा मीर राय जी, तो उसका जवाब भी देंगे ना, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते. राजगोपालन जी गेट्स द लास्ट वर्ड. Rajgopalan ji, how do you see this issue playing out now? It will go against Congress. My understanding is Chief Minister's Conference. Mr. Dr. Manmohan Singh spoke this. That is why Prime Minister is very angry. Therefore, Dr. Manmohan Singh should be held responsible for bringing out such a statement, appeasing one section of the community. All right. So will that happen? Will the Congress suffer because of this comment that was made by the then Prime Minister in 2006? I thank all gentlemen for joining us, and Times Now will continue to track that story. Time for us to head into a quick break.